हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, मैक्सिमम 6 हफ्ते तक ये चुप रहेंगे. This is a silent window when it comes to the Americans and the Canadians and the British and the Europeans. इसी के अंदर फैसला होगा. इट इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग. ये कोई यूक्रेन जैसी बहुत बड़ी कंट्री नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं. ना ये एक It सेकंड has सुनाए. already been decided. So, Shaji, just one I think I'd like to confirm as well, and bring to your knowledge. If sorry, that's not the right word. I just want to add to it. जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा since 2022, uh, don't you think it has changed the Russian narrative on the West, because they seem to have ऑफ been कोर्स इट हैज. वो they- तो नहीं, ऑफ कोर्स इट हैज. वो तो मैं आपको कह ही नहीं रहा. लेकिन वेस्ट इज नॉट जस्ट इजराइल. You have to understand there are Christian evangelical supporters of state of Israel in Russia as well. They're not connected to Americans. अमेरिकन के अलावा आप अगर रशियन पॉलिसीज को देखें एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर, one of the only countries which enjoyed luxuries from both sides in the Soviets as well as from the Western Allies was Israel. वरना तो सारा दुनिया बाकी दुनिया तो पोलराइज थी. So, how far is Ukraine war going to play? So they're going to come into certain amount of negotiations that is more deep rooted. अभी भी जो रशियंस हैं वो बड़ी डायरेक्टली जब आप अपनी स्टेटमेंट इसराइल के खिलाफ दे रहे हैं वो बड़ी नपीतोली दे रहे हैं. वो डायरेक्टली इसराइल को कह रहे हैं कि पीस टॉक्स करनी चाहिए. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. They are not saying कि Israel is a apartheid state. Number one, they're not stating कि Israel जो है वो गलत कर रहा है. No, they are just using different words for because of geopolitical reasons of the current nature, and they're just playing down on that. They're showing opposition to the Americans, yet they are not condemning Israel like they should. एंड दैट इज द होल थिंग. और फिर वहां पे बात ये आती है कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला नोशन है कि मुसलमानों ने हेल्प करनी है पैलेस्टीनियंस की, तो यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि सऊदी अरेबिया क्यों इंटरसेप्ट कर रहा है जो जा रहा है मिसाइल या रॉकेट फायर होने के लिए इसराइल के अंदर. हुज एलाय आर दे? और फिर अगर आप ईरान पे काउंट करके बैठे हुए हो तो ईरान को how far is Iran going to go? उनका तो जनरल इन्होंने 2018-19 के अंदर जब मारा था उसके बाद उन्होंने अटैक करने का सोचा था. वो तो उसके ऊपर भी चुप करके सही टाइम का वेट करने के लिए बैठ गए. Shaji, तो so यहाँ पे क्वेश्चन ये है. माय बॉटम लाइन इज, माय एंडिंग नोट ऑन दिस एंटायर सिचुएशन इज कि आप मुझे ये बताएं कि आपको इसके अंदर विनिंग सिचुएशन कहाँ नजर आ रही है. हम लोग बहुत सारी इमोशनल बातें करते हैं. ये खालिद भाई भी थे, मुझे नहीं पता कहाँ चले गए हैं. ठीक है, और लोग भी हैं. ठीक है, वी ऑल सपोर्ट पैलेस्टाइन, लेट्स क्लियर दैट. ठीक है, वी ऑल सपोर्ट के पैलेस्टाइन शुड बी फ्री. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है आप फ्रीडम उनको जिस तरह दे रहे हो, वो फ्रीडम तो जो है वो उनको जन्नत पहुंचा रही है. और जिन शहीदों की आप बात कर रहे हो वो हमास के लोग नहीं हैं. वो आम बंदे हैं जो अपने घरों के अंदर रात को सोए हुए हैं और दिन को वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे. आई एम टॉकिंग अबाउट द पैलेस्टीनियन पीपल. तो हाउ इज दिस इवन वर्थ इट? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. मुझे मुझे Shaji, इस I'd क्वेश्चन की like नहीं to. समझ आता. Guys, I just want to let you guys know it's the last 10 minutes. That's it. Go जी, on. शाजी, one thing, I endorse the Russian narrative because वो खुद अपना expansionist agenda pursue कर रहे हैं into Ukraine, and that is what led to NATO being armed around the region. So I agree how Russia and Israel can have certain similarities, but I think they are our best bet. Russia, China, and Iran, they are of sorts, they are representing the Muslim narrative, and we don't have any option but to rally behind them, especially when two of the countries are major veto powers in the Security Council.
Well, Hassam, I do not think they are proposing any Muslim narrative. I do not think they're going to go against Israel. I do not believe, and for a second, and this is based on the last 70 years of diplomatic relations between Russia and then Soviet Union and Israel. Abhi, it will be a negotiation. I do not think they're going to go completely outright against Israel. Maximum वो कहेंगे कि peace कर लो. Hold on. Maximum वो कहेंगे ceasefire कर लो, peace कर लो. और पीस जब हो जाएगा तो उसके बाद गाजा से निकालो इसराइल को, इसके ऊपर नेगोशिएशन में मीडिएटर्स मिल जाएंगे. Lekin Shaji, don't you agree? In the last 20 years, we've seen a global shift as well. You know, you've seen the rise of the rest happening. तो ऐसा हम जज नहीं कर सकते based on the last 20 years if something has been happening. अच्छा, आप It's मुझे इनमें से एक कंट्री बताओ जो आपने नेम की है, रशिया और China. चाइना, उनका इज़राइल के साथ दोनों में से किसका बुरा रिलेशन है? किस चीज़ के अंदर बुरा रिलेशन है? इंटेलिजेंस शेयर करते हैं वो? ये चेक करें आप। आप ये चेक करें कि क्या वो ट्रेड के अंदर कितने बड़े पार्टनर्स हैं एक-दूसरे के, ये चेक करें आप। क्या उन्होंने उनके ऊपर कोई सैंक्शंस लगाई या लगाने की बात की, ये चेक करें आप। ठीक है, फिर आप ये जाके देखें कि एड जो इज़राइल को रशियन बेहेस्ट के ऊपर मिलती है, ठीक है, उसके अंदर कोई रोकथाम हुई, ये चेक करें आप। जो डेवलपमेंट चाइना कर रहा है इस टाइम पे इज़राइल के अंदर, ठीक है, वो चेक करें आप इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Israel के अंदर चाइना हैज़ इन्वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या उन्होंने उसके ऊपर उनको थ्रेटन किया कि वो हम रिमूव कर देंगे? तो on what grounds are we saying that we are not talking about a global shift? On what grounds are we saying or suggesting or thinking that China or Russia are going to oppose Israel, rise against Israel? That is my question. China is advocating for a more fair equation on the global front for the last 4 or 5 years. वो ग्लोबल साउथ की एक नैरेटिव के साथ वो प्रोसीड कर रहे हैं. इन्होंने ब्रिक्स जैसे फोरम्स पे इन्होंने एक्सपेंशन की बात की है. Hassam, that is I, deviating from, with all due respect, that is deviating from my question. My question is not about कि वो बाकी दुनिया में क्या कर रहे हैं, वो तो मैं एग्री करता हूँ. मैं कह रहा हूँ I, इजराइल के साथ I रिलेशन के think अंदर वो क्या कर रहे हैं. I think it's मेरा all क्वेश्चन closely. बहुत डायरेक्ट I है. think I think it's very closely linked, and we cannot take any other factor in isolation when it comes to I'm not the taking global. it in isolation. I'm talking about the investment carried out by the Russians, which Sure, is true. I'm Uh, talking about the ammunition the Russians provide the Israelis. I'm talking about the investment and infrastructure the Chinese are providing. I'm talking about the fact that China happens to be one of the largest trade partners of Israel. I am talking about the fact that Israel happens to be one of the greatest trade partners of Israel. So when you keep all these things into account, जब for example रशिया और यूक्रेन का मसला हुआ है, तो रशिया तो ट्रेड नहीं कर रहा इस टाइम पे यूक्रेन के सपोर्टर्स के साथ, और यूक्रेन के सपोर्टर्स